Hey, all my viewers and subscribers, thank you for your support, motivation, and valuable feedback. Today, we are here with the new video on presentation strategies and oral communication, which is prescribed in AKTU syllabus of BTech second sem and third sem. So, we see that presentations are integral part of professional life. Success of a professional directly depends on the successful presentations made by him or her. Now you see, presentations are very important because success in presentation decides the life of a professional. And now, if you want to get success in presentations, so what is the important thing? Success in presentation depends on proper planning, presentation and strategies you adopt. You have to proper plan and then you have to prepare for it and then you have to adopt certain strategies so that you can get success in the presentations. So now one thing is important, that planning, preparation and strategies, these are the key things when you talk about presentations. Somebody will say that what actually the presentation is. When you are talking to someone, it is also a kind of presentation. If you are talking to an audience regarding a particular subject or object, regarding a particular purpose, it is called presentation. Audience is singular or plural, both, because audience can be one or many. So in that case, even though you are dealing with single person or a large number of audience, still if you want to solve your objectives, you are required to proper plan, prepare and adopt strategies, particular strategies to get success in that presentation. And now following strategies would help you in success. These are the strategies which I will discuss would help you in getting success in presentations. First and foremost thing is that you have to define the purpose of your presentation. You have to analyze the purpose. What is the purpose of your presentation? What kind of objectives you are going to solve through this presentation? When you are discussing the things with an audience, what are the objectives behind it? You have to find out the clear purpose of your presentation. And what can be the purpose of your presentations? These are some purposes which are generally behind the presentations. First is to inform or instruct. First and foremost purpose is to inform or instruct. It is very obvious purpose in professional setup. Second is to explain or analyze. Third one is to motivate or persuade. Fourth one is to entertain. Once you have decided your purpose of presentation, you can easily decide required content and style. If you are unable to define the purpose of your presentation, generally the general people cannot do it. In that case, they are unable to present the exact appropriate content and style for the presentations and they get failure. So in that case, if once your purpose is decided, what actually the purpose is, which is mentioned in the chart, to inform or to instruct, you have to decide content and style. क्या content होगा, क्या विषय वस्तु होगी, किस प्रकार की style आपको adopt करनी है, so that you can influence your audience, so that you can let your audience understand your content properly. For example, if your purpose is to inform or instruct, you are required very particular content, very brief content, very objective content, and then you have to adopt serious style. You have to be serious. Does not mean you become serious seriously like illness reflected on your face. Serious means you take your words so seriously. You have to be very objective in style and content. If your purpose is to explain or analyze, in that case
In that case, you are required to represent relevant additional details. Not only you have to provide information, and when you are analyzing that information, you are providing detail, you need to be very objective. In case of you have to provide only those details which are relevant. You have to provide only those examples which are suitable to explain the content. And another aspect, which is another purpose which is very difficult, to motivate or to persuade. Motivating is the third purpose is very critical, to motivate or to persuade. Motivating someone is a very difficult task. You are required logical content, as at the same time you have to remain very positive in style and attitude. You have to be very sincere in your efforts. So motivating and persuading means to motivate someone to the extent that he or she himself prepares for a particular course of action. परसुएडिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति को इस हद तक मोटिवेट कर देना कि वो अपने आप किसी काम के लिए अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कर ले, फिर उसको फर्दर मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े. मोटिवेशन में क्या है कि एक बार मोटिवेट कर दिया तो हो सकता है फिर दोबारा मोटिवेशन की जरूरत पड़े. तो when you are persuading someone for a particular course of action, you require logical content. You require very particular content, and you have to adopt very appropriate style. बहुत अच्छी स्टाइल की जरूरत पड़ेगी ताकि अगले को विश्वास में ले सके. To entertain, I don't need to explain. When your purpose is to entertain, you are required to get the content which is entertaining, and you are required to follow the same style. Now, second important thing is analyzing, defining your location and audience. Once you have decided your purpose of presentation, what next you have to do? You have to analyze, define your location and audience. Location, analyzing locale is very important, because location or a space in which the audience is sitting. Locale is called the space, the place in which the audience is sitting. So in that case, that has certain every place has certain impact on the mindset of your audience. You have to analyze the locale for these reasons: suitability, temperature, seating arrangements, and design. Suitability means every discussion, every objective, every content cannot be delivered on every space. मान लिया आपका बहुत सीरियस मैटर है, जैसे क्लासरूम में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने सीरियस मैटर्स? बिकॉज दैट प्लेस हैज सर्टेन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ ऑडियंस. स्टूडेंट होते हैं, क्लास में पहुंचते ही उनका मूड और एटीट्यूड जो है वो बदल जाता है, क्योंकि स्पेस इज डिजाइंड इन अ वे. इस तरीके का स्पेस होता है, इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट होता है, इस तरह का माहौल होता है कि द पीपल अंडरस्टैंड द थिंग्स. सो स्पेस का महत्व होता है. पिक्चर में देखा होगा आपने कि बहुत सारे सेटअप बनाए जाते हैं, लोकेशंस बनाए जाते हैं, लोकेशंस को मॉडिफाई किया जाता है ताकि व्हेन द थिंग्स आर स्पोकन इन दैट एटमॉस्फियर, तो इन दैट केस जो है इम्पैक्ट विल बी इंक्रीज. तो सुटेबिलिटी क्या है? एवरी कंटेंट रिक्वायर्स पर्टिकुलर स्पेस. हर बात को हर जगह नहीं रखा जा सकता. सेकेंड इज टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द की. इफ इट इज द, फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज द cold season and the audience is sitting on steel seats, in that case they will not be able to listen you. उनके लिए टेम्परेचर, एयर कंडीशन का अगर हो प्रॉपर जो है, और खास करके सीटिंग अरेंजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे मस्ट हैव प्रॉपर space to sit, proper arrangements for seating, and another aspect, they must have proper arrangements of water and other aspects, so that if it is long presentation, they can get it easily, and they should not deviate from the presentation. Another aspect is design. Nowadays it is the age of science and technology. People design an atmosphere. People if you could prepare a particular place, design well according to the objective of your presentation. For example, nowadays political parties, they organize their rallies in systematic way. They
so that they can prepare the mood of their audience according to their objectives. तो उनका जिस तरीके से, तो उस तरीके से मूड प्रिपेयर करने में लोकेशन का इंपॉर्टेंस होता है. तो डिजाइन कर सके तो बढ़िया से डिजाइन करिए और ये सारे एस्पेक्ट्स आप देखिए. अनदर एस्पेक्ट इज डिफाइनिंग, एनालाइजिंग, नोइंग योर ऑडियंस. You see, in Indian context, in Indian culture, audience is considered to be God. You may have heard, जनता जनार्दन है. जनता जो डिसाइड करती है. रामायण में भी अभी हम लोग देख रहे थे कि भाई राम ने एक जनता के कहने पर अपनी वाइफ को राजधर्म का पालन करते हुए जंगल भेज दिया. तो जनता जनार्दन है. So those people who understand the importance of their audience, they speak well, they speak seriously, they take their words, before they speak words they analyze their audience. जनता को जब आप किसी के सामने बात कर रहे हैं तो पहले उसका एनालिसिस करना जरूरी है, चाहे वो एक आदमी हो चाहे हजारों की आप ऑडियंस. जैसे फर्स्ट इज देयर इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. उनको पसंद क्या है, उनके इंटरेस्ट एरियाज किसी टॉपिक पर क्या हो सकते हैं, उनको हिट करना. लाइक्स क्या है और किन चीजों को नापसंद कर सकते हैं, जिन चीजों पर उनकी समझ, ज्यादातर जिन चीजों पर आप समझ नहीं बना पाते उनको लोग नापसंद करते हैं. अनदर एस्पेक्ट इज बैकग्राउंड. बैकग्राउंड ऑफ ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट. इवन दो इट इज थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस, हजारों की संख्या में लोग हैं, फिर भी यू अंडरस्टैंड देयर बैकग्राउंड. You are required to understand their background for these reasons. Educational background क्या है, क्या पढ़े लिखी है ऑडियंस ज्यादा है या मिक्सचर है. सोशल, सामाजिक बैकग्राउंड उनका क्या सकता, पिछड़े हैं, पिछड़ा तबका है या किस तरीके का है, तो उस हिसाब से आप कंटेंट और स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं. कल्चरल बैकग्राउंड, जियोग्राफिकल बैकग्राउंड, अलग अलग रीजन के लोग हैं तो उनको डील करने का अलग अलग रीजन है. जैसे यू मे हैव you may have heard some leaders who use the language of the people of a particular region in order to let them know that they understand them. कुछ लोगों की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उनका अपीयरेंस, गेटअप इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे वो जुड़ सके. अनदर एस्पेक्ट इज एज रेंज. एवरी एज हैज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव. उसके टेस्ट, इंटरेस्ट और डिजायर्स अपना अलग अलग हो जाती है हर एज में. तो अगर आपका देखिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डीलिंग विद द एज रेंज ऑफ 18 to 25, दे आर वेरी एनर्जेटिक, they are very hopeful, they are full of energy. So when you are dealing with them, you need to be energetic, you need to be very, they require serious matters, they want to get knowledge early and easily. So in that case, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी तरीके से चाहते हैं तो उनके सामने इन चीजों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने की जरूरत है, सही बातें रखने की जरूरत है और अच्छे तरीके से. फिर है जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, मेल फीमेल अदर जेंडर रेशियो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू. इफ यू आर टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डीलिंग विद फीमेल ऑडियंस, दे रिक्वायर serious people, they like polite people, polite tone, polite attitude, sophisticated people. And if you are dealing with the such an audience which has common audience, so in that case you should not use any controversial statement that can hurt the sentiments of a particular gender. मान लिया आपने महिलाएं बैठी हैं कुछ और दोनों का मिक्सचर है, महिलाओं पुरुष है और आप पुरुषवादी दृष्टिकोण के, और आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो महिलाओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गई, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है. तो अनदर एस्पेक्ट इज मूड एंड एटीट्यूड, फ्रेंडली और होस्टाइल. अंडरस्टैंडिंग द मूड एंड एटीट्यूड ऑफ योर ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट. वी आर टीचर्स एंड व्हेन वी गो टू द क्लासेस and if we are unable to analyze the mood and attitude of our audience as a whole and we start speaking and they are not settled, then they will not be able to understand you properly. Even though few people from the audience are serious, still they will not be able to understand you, क्योंकि शोर हो रहा होगा, लोग डेविएटेड होंगे तो दिक्कत आएगी. फिर क्या है, बिफोर अपनी ऑडियंस के मूड और एटीट्यूड को अच्छे से कर लीजिए, उनको फ्रेंडली बनाइए, अगर होस्टाइल है तो उनको सेटल करिए. फिर अनदर एस्पेक्ट इज दैट, लास्ट एस्पेक्ट, लेट देम सेटल बिफोर यू स्पीक एंड ग्रीट देम इन प्लीजेंट टोन यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स. हमने फिर से कहा है कि पहले उनको सेटल हो जाने दीजिए, वो कायदे से बैठ जाएं,
उनको एक बार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लीजिए, उनसे अच्छे शब्दों का से बात कर सकते हैं, उनको प्लीजेंट टोन में ग्रीट करिए, अच्छे तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। जिस प्रकार की ऑडियंस है, जिस प्रकार के स्पीकर की आपकी पोस्ट है, जिस प्रकार का स्पीच आप डिलीवर कर रहे हैं, उसके बाद में सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, उचित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आप देखिए कि बहुत जल्दी द मोमेंट यू ग्रीट देम दे टेक यू सीरियसली। जैसे ही आप उनको यू लेट देम रियलाइज दैट यू आर हैप्पी टू बी विद देम, आप उनके साथ रह करके खुश हैं, यू आर, तो दे अल्टीमेटली टेक यू सीरियसली एंड they start listening you. Another aspect is organizing content, which is a large aspect. So I will discuss this in another video. For this video I would like to thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.